फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। A very happy new year to all our viewers and all our fans watching this special broadcast. As promised in our year-ender show, we are here with a very special segment on the domestic circuit, whether it needs a revamp going forward, and we are less than 2 sleeps away from start of another Ranji Trophy season. The chill has already gripped the northern part of the country, and the teams are sweating it out in anticipation and gearing up for another Ranji Trophy season. And it can't get better than this. This is my favorite part of the year when the red ball does a bit, and batters and bowlers are challenged across the country. So joining me today is Network 18 Group Sports editor K. Srinivas Rao, former India cricketer, Delhi stalwart, Punjab stalwart, has donned many hats. Gursharan Singh, and our very own Chaitanya Nanda, who has featured for us in many shows. He's a former Delhi cricketer and also a former Delhi selector. So welcome, gentlemen, and a very happy new year to all of you. So Happy New Year, everyone. We all talk about the Ranji Trophy, how relevant it is right now. Lot of players, ex-cricketers who have been part of the Indian setup, India discards who are looking for a comeback into the national side. All of these players, young, old, relevant, irrelevant, play in this tournament. All of you gentlemen, Gushpa and Chaitanya, you both of you have had illustrious careers and have played Ranji Trophy too. So in this day and age, how relevant is Ranji Trophy looking at the international landscape, whether it is bridging that gap between the national side and the state side? So first, opening remarks, Trini, we have had numerous discussions around this tournament, how relevant it is. 5th January will be the first round matches will get underway. So where do you see Ranji Trophy kind of fitting into the overall scheme of things? It's very weird. Like, if I were to look at my own career as somebody who's tracked the game, since I started. So as a journalist, you tend to obviously begin your career tracking age group cricket. Then you get to learn. Then you try and understand first class cricket. You cover first class cricket for a while, and then you move on to covering a top level cricket, which is as a player, as anybody else in the ecosystem, that's how you move. Now, this very topic, about domestic cricket, to just cut a very long story short, I'll just put it this way: that very learning process of beginning at age level, going to first class, whatever, Ranji Trophy, and then going to cover international cricket, that process itself in the life of a journalist has changed. Yeah. Me, as somebody who's documenting, whose job and responsibility it is to document the narrative of a game, my own job and responsibilities have changed considering the way cricket is changing. Now look at the younger generation that is documenting the narrative of the game, tracking the narrative of the game. An IPL has come in. One days are you losing relevance? I just saw a statistic. This year, India will play 3 one-day internationals. That's it. Only 3 one-day internationals this year. And then looking at the way red ball cricket is changing. That first thing that occurred to me is, जो इस गेम के साथ ट्रेडिशनली जुड़े हुए हैं, उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता पकड़ रही है क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट कौन सा रास्ता पकड़ रही है. और जब इतना ट्रैक करने के बाद में अगर हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, तो एक बिगिनर लेवल का जो बच्चा है, या एक बच्चा है जो एक अपने करियर के बीच में है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को आज भी उसी सीरियसनेस के साथ परस्यू कर रहा है, इन द होप दैट देयर इज ऑलवेज अ बिग पिक्चर, उसके लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है? What is the takeaway for a child? That is, something that's the crux of the idea that I had in mind. I'm happy to talk about it and listen to from all of y'all. Chaitanya, 14 years ago, you played your last first-class match. I'm sure the memory would be still fresh. Bengal versus Delhi was the last first-class match. 3 साल हो गए थे IPL को, मतलब
बातचीत शुरू हो गई थी. You yourself would have been around that setup, trials and all that jazz was gripping the entire cricketing ecosystem, so to say. बट अब अगर आप 14 साल के बाद रणजी ट्रॉफी को देख रहे हो, जहां पर आईपीएल हैज बिकम सो रेलेवेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, रणजी ट्रॉफी का सीरियसनेस आपको, आप सिलेक्टर रह चुके हैं दिल्ली के, आपने क्लोज क्वार्टर से देखा है किस तरीके का सीरियसनेस क्रिकेटर्स को रहता है. अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डू दैट, बट देयर आर क्रिकेटर्स जो खेलना ही नहीं चाहते रणजी ट्रॉफी, क्योंकि वो रहते हैं कि यार आईपीएल में जाके अब 7-8-10 ओवर वहां नेट में तेज फेंकेंगे, क्यों अपने आप को 25 ओवर पाटा विकेटों पे डाल के अपनी बॉडी खराब करनी है. तो उस लिहाज से आपको कितना लग रहा है माइंडसेट इंडियन क्रिकेट के लिए, हाउ डेंजरस इट इज? सही, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला. मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी, अगर आपको आज क्रिकेट के किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो आप आईपीएल को बाहर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आईपीएल अब ऐसी चीज हो गई है जिसको आपको हमेशा कंसीडर करना ही पड़ेगा. बिकॉज रीजन इज एवरी क्रिकेटर वांट्स टू प्ले आईपीएल. जब हम छोटे होते थे तब बच्चों को मैंने सुना था, कोई बोलता था मुझे शेन वॉर्न बनना है, कोई बोलता था मुझे सचिन बनना है, कोई बोलता था मुझे इंडिया के लिए खेलना है. बट आज अगर आप अकेडमीज में जाते हैं या किसी पेरेंट्स से बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है किसी भी कोच से, क्या मेरा बच्चा आईपीएल खेल सकता है? सो यू सी द कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर द जहां पे सीड डल रहा है. एक पेरेंट जो बच्चे को लेके आ रहा है ग्राउंड पे, वो उसके माइंड में शुरू से आईपीएल के लिए ही उसको प्रिपेयर करा रहा है. इट्स नॉट द चाइल्ड हु वांट्स टू प्ले एन आईपीएल, इट्स द फैमिली हु वांट्स हिम टू प्ले द आईपीएल. सो द इवोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई, इतना इवॉल्व हुआ है क्रिकेट इसके अंदर कि everybody wants to go towards IPL, not the domestic cricket. Yeah. But yes, we can address this problem of Ranji Trophy not becoming a better place for players by addressing some changes in IPL selections. मैं जब BCCI में भी था, at that point also I told them to one thing. See, अगर आप बेस्ट ऑलराउंडर हो, आप बेस्ट बॉलर हो, आप बेस्ट बैट्समैन हो रणजी ट्रॉफी के, अगर आपको ऑटोमेटिकली आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीम के अंदर, मतलब इफ नोबडी पिक्स यू अप, इट हैज टू बी कंपल्सरी फॉर द फर्स्ट चैंपियन टीम टू पिक अ बेस्ट ऑलराउंडर, सेकंड रनर्स अप हैज टू पिक अ बेस्ट बॉलर, थर्ड प्लेस हैज टू पिक अ बेस्ट बैट्समैन. So you will get awarded when you start performing for your state teams, your in a first class cricket. तो अभी क्या होता है, बच्चे जो हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो ये सोचते हैं यार मैं कैसे आईपीएल खेलूं. दे हैव नो, और इंडिया खेलने का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका क्या हो गया, आईपीएल हो गया है. एवरीबडी इज गेटिंग पिक्ड फ्रॉम आईपीएल. तो प्रॉब्लम क्या, एज ए क्रिकेटर जब मैं खेल रहा था उस टाइम पे मैं मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला, बट तब भी ये सिस्टम बन चुका था कि अगर आप आईपीएल में अच्छे करते हो तो आप बहुत जल्दी ग्लैमर के अंदर आते हैं, आप बहुत जल्दी आपको प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं. बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट हर कोई देखता नहीं है, बट आईपीएल इज लाइक अ फेस्टिवल नाउ, एवरीबडी वॉचेस इट, एंड व्हेन समबडी इज परफॉर्मिंग देन एवरीबडी स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट इट, ट्वीट चलता है, सोशल मीडिया बिकम्स सो स्ट्रांग. सो इट आल्सो, एज ए सिलेक्टर आप उसको भी नोट कर रहे होते हो. बट आई स्टिल फील जब आप इंडियन टीम को सिलेक्ट कर रहे हो टेस्ट के लिए, then you cannot see IPL, then you have to ignore it, then you have to see Sarfaraz like a boy that who is performing consistently. But मैं इसी की बात कर रहा हूँ, अब सरफराज जैसा लड़का जो इतना रन बना रहा है और वो बेस्ट बैटर, बेस्ट हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द ईयर है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, तो where he will go? He will start thinking how I can play IPL, then he will start doing the changes in his game. तो ये फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर है. तो हमें इस क्राइटेरिया को अगर हम ठीक करते हैं तो काफी सारे प्लेयर्स विल गेट मोटिवेटेड. बिकॉज इफ आई एम नॉट गेटिंग पिक्ड, द इजीएस्ट वे इज टू बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन गेटर और द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द रणजी ट्रॉफी, एंड आई विल get picked automatically. I don't need to go to anybody, I don't need to talk to anybody, I have to just perform. So people will start fighting. Think लास्ट के 4 मैच बचे हैं या 3 मैच बचे हैं और ऐसे 10-12 बॉलर हैं जो ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे हैं. तो आप सोचिए वो लेवल ऑफ बॉलिंग कैसी हो रही होगी उस टाइम पे, बिकॉज इफ आई टॉप दैट आई विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट इन आईपीएल, आई विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट. तो वो बॉलर कितना पुश करेगा, जो आप बात बोल रहे हैं ना कि बॉलर कह रहा है यार 25 ओवर क्यों फेंकूं, लेकिन अगर वो उस जगह पर होगा तो उसको वो मोटिवेशन होगी कि यार नहीं, मैं आज बॉल डालूंगा और मैं विकेट लूंगा फालतू और मैं आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लूंगा. सो दिस इज द वे यू कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम. I completely agree with the suggestions you have made. And before moving on, I think I would like to add former BCCI treasurer, long-standing BCCI office bearer, the life of Lali, as we call him, Mr. Anirudh Chaudhary. Sir, welcome to the show. If you could just change the orientation of the screen to landscape, please.
Does that work? Yeah, this works. This works. So before taking Mr. Chaudhary's thoughts, I think I'll just quickly ask Gushpa, Chetan Baji ne bahut How are valid you? points raise kare yahan pe, where he was, trying to say how we can address the elephant in the room, ki how we can still keep Ranji Trophy relevant. You have been a domestic stalwart yourself, playing for Punjab, playing for Delhi, और आपने ecosystem को क्लोजली चेंज होते हुए देखा है, और अब आप ग्रास रूट लेवल पे जब कोचिंग करते हैं तो अभी भी सवाल तो वही रहता होगा ना कि सर आईपीएल कैसे खेलना है, या कोई पूछता है कि रणजी ट्रॉफी भी कैसे खेलना है? नहीं, चेतन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अभी हर किसी को यही लगता है, पेरेंट्स को भी, कि आईपीएल खेल जाए, लेकिन इसमें ड्यूटी बनती है कोचेस की। जिन अकेडमियों में, जिन क्लब्स में वो जा रहे हैं, तो वो कोचेस उनको बताते हैं कि पहले अगर आपके बेसिक्स ठीक होंगे। अब देखिए, अगर शुभमन गिल, सूर्य यादव, ऋतुराज, ये सब अगर अच्छा आईपीएल में, सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप उनका डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड भी देखिए, वो भी उनका 50 के ऊपर एवरेज है, उन दोनों की, उन तीनों की। तो अभी ये यही हो गया कि डोमेस्टिक में आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, एंड इट इज गुड कि आईपीएल आया है। आई थिंक हमारे टाइम में क्या होता था, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं हम, तो एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट साहिल खेलना पड़ता, तो एक थोड़ा गैप आ जाता था। बट अभी आईपीएल के आने से जो भी डोमेस्टिक, जो हमारे लोकल लड़के हैं, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट रबाडा, स्टेन, इन सबको खेल रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैनों को बॉलिंग डाल रहे हैं। तो उससे वो जो इंटरनेशनल खेलने का वो जो थोड़ा सा झांका था, वो काफ़ी ख़त्म हो गया। और जिसके रणजी ट्रॉफी में आप देखिए, जिन्होंने अच्छा किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में ना, वो सभी आईपीएल में फ्रेंचाइजी उनको पिक करते हैं। तो पहले कई बार क्या होता था कि कोई प्लेयर अगर अच्छा कर रहा है T20 में, तो उसको एकदम ले लेते थे। बट अब आई थिंक फ्रेंचाइजी भी थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो उनका बैकग्राउंड भी देखते हैं कि डोमेस्टिक में कैसा किया है, कि वो एकदम पिक नहीं करते हैं। अभी आप देखो, इसमें भी कई लड़के ऐसे हैं कि जो T20 में अच्छा किया, लेकिन वो आईपीएल में नहीं आ सके। तो ये काफ़ी चेंज आया है, और इट इज़ गुड कि आईपीएल हो रहा है, और इससे काफ़ी फायदा हुआ है हमारे प्लेयर्स को भी। Yeah, Mr. Chaudhary, before I kind of pick your brain on being the BCCI administrator for such a long time and probably seeing the game change and evolve from close quarters, we were chatting the other day when Haryana won the Vijay Hazare Trophy, and the players were actually rewarded right after that season because plenty of them did actually attract bids at the auction table. So you reckon that the tournaments are still very relevant, and teams which are doing well, winning titles like our boys for Haryana, Rahul Tewatia became a household name because of the IPL, but what he has been doing for Haryana in the domestic circuit too. So how important does the entire domestic setup kind of hold in the larger scheme of things right now? See, if you ask me, domestic cricket is the bread and butter of BCCI. Without domestic cricket, you'll have no new players. You'll have no players to fill the squads in the IPL. The quality of cricket will go down because you see, IPL, look at IPL as a marketplace. But the product gets ready at the domestic level, in the sense that even IPL is domestic, but it gets ready at the Ranji Trophy, Vijay Hazare, Mushtaq Ali level, the under 19 level, the under 23 level, the under 16 level. So that's how a player develops. So there's no franchise who can actually develop a player right from the under 14s till the senior. He gets that finished product in the marketplace. The production line is domestic cricket, and it's very important. It's very crucial. And you talk about players getting rewarded by being selected in the IPL. The way I look at it, and not everybody may look at it in that manner, the way I look at it, performing well in domestic cricket is a reward in itself. Although you see there are certain changes which have come in on account of the Loda committee, you find a little bit of certain teams which are a bit new, they find it a bit of a struggle to come up against the big teams. But there is immense talent in those states as well, right? But at the same time, if we are to address the question of how to make domestic cricket or Ranji Trophy or Vijay Hazare or Mushtaq Ali more relevant. I think, like anything else, a good performance in that has to be incentivized, irrespective of somebody, picking a boy in the IPL or no. IPL is a great product. IPL is a wonderful platform, but
if you would to rely on only one platform for the success of Indian cricket, you will fall flat very soon. Yeah. So, so my understanding is that I come from that school of thought, or rather the cricketing lineage, where a Ranji Trophy win means much more than an IPL victory. So IPL may have lots of money, everything, and of course any team wants to win whatever competition they're a part of. But as far as I am concerned, for me, Ranji Trophy is extremely important. And I think somewhere, see, because right now we have a situation where you have some decent people who are heading the BCCI right now. Yeah. But at the same time, right across the state associations, because of the sudden gap that you feel on account of the implementation of the Lodha committee recommendations, there is a lot of new talent coming up, but unfortunately, the experience went out at just one instant in time. It's so an experience counts. As far as I am concerned, as my view is, experience counts a lot, and it is the experience which the transfer of that experiential knowledge which you've learned over the years, is like I say, Sachin Tendulkar is a sum total of all Bombay batsmen, Mumbai batsmen before him. So Yeah. every generation learns something and then transfers it to the next generation. So Virat Kohli is a sum total of not only all the Delhi batsmen before him, but also the Indian batsmen before him, because somebody like a Sachin or a Sehwag or whoever it was took their time to try and mentor him, to try and transfer their knowledge, and he made the most of it. And similarly, if Virat was to limit himself to the IPL, the production line of Indian cricket would get disturbed. So if I was the one somebody would ask advice from for what somebody like a Virat should do, I would want Virat, I would want KL Rahul, I would want these Indian stars to be playing for their state sides, and that is how you will get the next generation of stars, the next generation of excellent cricketers, because Yeah. till you do that, the future of Indian cricket is something we'll always talk about, we'll always think about. But the strength or surety of success of Indian cricket depends on domestic cricket. Yeah, very very rightly mentioned. Now, just taking this conversation a bit forward and bit to an advanced stage. Trini, we were discussing this a couple of days back, and before the show got underway. Now that Ranji Trophy, as all the veterans out here have been mentioning that it's still right up there, and you just can't remove that from the ecosystem. It still holds a lot of importance. There is money involved in Ranji Trophy, right? Because the way BCCI have kind of hiked the match fees now with different brackets of players who have played certain number of games, so a good average Ranji Trophy cricketer could end up making 10, 12 lakh a season any which way. So that is close to the 20 lakh you would make for a base price bid in the IPL. So just to make the domestic circuit more fashionable, do you reckon it's time that we do something with the Dilip Trophy then? Probably introduce a challenger based format and get rid of something which we are still following, North Zone, South Zone, West Zone, where there I personally feel that there's a discord between the larger picture and what the state associations in sync up with the various zones are doing. Because just to address that long term goal, could we have a tournament, say a Dilip Trophy, where we have 4 challenger teams which are picked by central selectors who kind of look at feeding their requirements for the senior side and make it more glamorous, so to say? Are you asking me? No, I asked Srini. I'll take your thoughts Okay. after Srini. Srini, you're on mute. Right. So Yeah. glamorous is a term that we'll probably leave out of this for now. There are a couple of other things that come to mind. Number one, uh, I personally have believed for a while now that ye jo, I mean, I would love to take other people's views on it, especially Anirudh. The reward culture in domestic cricket, where IPL has really kind of taken the benchmark to another level, right? Why is it that an average kid, where Chaitanya talked about it, Gushrat sir talked about it,
An average kid today wants to go and play the IPL. Why? Because there are rewards. Even if those rewards are instant, they are next level rewards, right? They financially are providing you immense amount of securities, right? So I personally believe, before I go any further into this conversation, I personally believe that the reward culture in first class cricket in India needs to go jump up by miles. It needs to go up. This ये हमने 10 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया is not what I'm looking at. Indian cricket is earning lots of money. इंडियन क्रिकेट के पास बहुत पैसा है, और ये पैसा अगर क्रिकेटर के पास नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहा है? तो मुझे, मेरा ये मानना है, फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ सिंपल थॉट प्रोसेस हियर, कि आईपीएल, आप आईपीएल को, क्रिकेट को बाजू रखो, आईपीएल में जो पैसा आ रहा है वो देखो। वो आप कहाँ से शुरू हुआ था? 800 करोड़ से वो शुरू हुआ था। वो फिर वो गया गया गया, वो सीधा 18,000 करोड़ 10 साल बाद, उसके 15 साल बाद it touched whatever 48,000 crore. So if the growth patterns of IPL have grown 3 times or 4 times, has salary grown 3 or 4 times, has there been a pro rata increase? And by that I also mean to say, what is the kind of bulge that the domestic purse has seen? Why I think so is because a cricketer, we know, is investing the prime part of his or her career playing the Ranji Trophy or the Duleep Trophy, right? And career becomes way too important. वो पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेल रहा है, बिजनेस छोड़ के क्रिकेट खेल रहा है, एक करियर वहां बनाने की कोशिश कर रहा है, इन द होप that something may happen, something good may happen. And वहां मेरा कहने का मतलब है कि जो उसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं एट द एंड ऑफ अ वेरी शॉर्ट करियर, अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन, आप 35 पे आप रुक जाते हो, 40 पे आप रुक जाते हो, उसके बाद में आपकी करियर जो है वो कर्टेल हो जाती है। बाय देन देयर शुड बी अ कल्चर बाय वे ऑफ विच द क्रिकेटर फील्स इन्वेस्टेड, जो मेरे ख्याल से नहीं है। That is one area that any which ways needs to be looked at very seriously. Having said that, I'll quickly come to the cricketing bit. Sahil, you and me were having this chat. I remember one of the conversations was कि आज एक 32 साल अगर लड़के के निकल गया, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लास्ट वर्ड है, मुझे ओपिनियन चाहिए बाकियों से। एक लड़का के 32-33 साल हो गए, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसको पता है कि वो रणजी ट्रॉफी में और कुछ नहीं करने वाला, उसको पता है कि वो इंडिया कंटेंशन में नहीं आने वाला, ठीक है? उसके कारण हो सकता है एक 19 साल के बच्चे की जगह रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वो 32 साल का है, वो स्टेट एसोसिएशन में बड़ा डीप रूटेड है, वो 20 साल से खेल रहा है, तो उसकी एक अलग किस्म की पहचान हो चुकी है, वो 4 लोगों को जानता है, उसका एक दबदबा है, तो जो भी है, एक स्टेचर है। हो सकता है उसके कारण एक 20 साल का लड़का हो जो अपॉर्चुनिटी मांग रहा हो बट नहीं मिल रही है, उसे रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हमें एक बैलेंस की तरफ देखना चाहिए? क्या इसमें हमको ये कंसिडर करना चाहिए कि आप दुलीप ट्रॉफी जो है वो उसमें से एज ग्रुप हटा दो कंप्लीटली, बट रणजी जो है वहां पे क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि 2 से ज्यादा अबव द एज ऑफ 28 नहीं खेल सकते? आपको एक कैप लगाना पड़े, जरूरी है। नहीं तो क्या है, प्लेयर अगर वो उसका कहीं फ्यूचर अगर कहीं जा भी नहीं रहा, उसको पता है कि मैं एक स्टेट एसोसिएशन पकड़ के बैठ जाता हूँ, मेरी एक या किसी से पहचान अगर है तो मैं खेलता रहूंगा, मैं 30, 34, 35, 36 तक खेलता रहूंगा। और यंग फिर बच्चा कहाँ जा रहा है? एक यंग बच्चा है जिसको एक सही उम्र पे मौका मिलना चाहिए, क्या वो मौका मिल रहा है? और उसी को मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके एक लेवल और नीचे आऊंगा। अंडर 19 क्रिकेट, जो मेरे लिए एक बहुत काफी दिमाग टाइम से मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अंडर 19 क्रिकेट का क्या रेलेवेंस है? क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे अंडर 19 होता है, तो अगर आप इंडिया में, अगर आप डोमेस्टिकली अगर अंडर 19 क्रिकेट खिला रहे हो, और अगर आप उसमें से अगर आपको 10 बहुत टैलेंटेड बच्चे मिल रहे हैं, इंटरनेशनली तो वो वैसे भी ब्लूम नहीं कर सकते क्योंकि अंडर 19 से तो वो पार हो गया, राइट? तो क्या उसको आपको अंडर 17 पे ले आना चाहिए? डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडर 17 पे ले आए, ताकि अगर आप एक 15 या 20 क्रिकेटर्स का अगर पूल आप सिलेक्ट करें, तो उसे फिर अंडर 19 की और आप उसको चैनलाइज करें। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है। और रही बात लास्ट दुलीप ट्रॉफी की,
चैलेंजर का मॉडल होना चाहिए, पता नहीं, बट डेफिनेटली जो अभी का जो जोनल मॉडल है, दैट हैज टू गो, द जोनल मॉडल हैज टू गो, और एक 3 टियर सिस्टम दुलीप में आना जरूरी है। अगर में ये कब आना जरूरी है, अगर रणजी को आप ऐसे ही रखना चाहते हो, रणजी अगर इसी फिल्टर्स के साथ और इसी मॉडल में अगर रणजी कंटिन्यू होना है, तो दुलीप को आपको एकदम एलीट और एकदम प्रीमियम बनाना है, जिसमें 4 टीम खेलेगी या 3 टीम खेलेगी अगर चैलेंजर का मॉडल है। उसमें आपका जो सिलेक्शन हो रहा है, द नेशनल सेलेक्टर्स हैव टू बी इन्वॉल्व, नेशनल सीनियर सेलेक्टर्स हैव टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि अगर आप दुलीप खेल रहे हो, आप तभी इंडिया के सिलेक्शन में आप रडार में हो, नहीं तो आप नहीं हो। अगर आप दुलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड नॉट बी इन दैट रडार फॉर इंडिया सिलेक्शन। तो ये जो चैनलाइजिंग है, ये मेरे ख्याल से ऑराय हो गया है, थोड़ा सा एक इधर उधर भटक रहा है, ये एक डायरेक्शन में नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इस हाल मैं और बात करूंगा तो वो डाइग्रेस होता जाऊंगा, तो यहाँ रुक जाता हूँ। No, quick remark from Mr. Chaudhary on this, because you were the convener of the North Zone selection meetings, and See, you were lucky enough to have. Yeah, can you hear me? First of all, we'll talk about Duleep Trophy. I firmly believe, is my view, seeing everything, that it should remain the zonal tournament that it is, because I have a reasoning behind it. The reasoning behind it is that there may be an exceptional performance from somebody in a zone who's not on the radar of the national selectors. Okay, there must be there may be a really talented guy who's not on the radar of the national selectors. And if he's not on the radar of the national selectors, you'll find that he will not play Ranji Trophy. He will not play Duleep Trophy if it is not zonal. And secondly, the aspect of it is only the zonal committee that should select, therefore, the Duleep Trophy team. Because let's say you have Gursharanji coming in from DDCA, or Chaitanya coming in from DDCA. You have, say, Chetan coming in from Haryana. So the whole idea of a good zonal committee meeting is that you stop thinking state and start thinking zone. And therefore, in that exchange of ideas, in the exchange of views on players, you start knowing and learning more about the players of the other states. And the buzz that is created with the domestic cricket is actually finds its voice there. So if we were to do away with the zonal system, we would be killing the value of domestic cricket even further. So therefore, it is my belief, very strong belief. Like for example, in our zonal committee meeting, there were hints. There was nothing clear, but there were hints that certain, the senior committee is interested in looking at X, Y, or Z, right? And as a convener, I don't have a vote. As a convener for this year, I did not have a vote. Did not. But my view, I expressed my view to the committee, saying that yeah, fine. The senior somebody in the senior selection committee may be looking at an exceptional player. Fair enough. Yeah. But that would mean that they are dictating. If we were to listen to that and take a decision, be influenced by that, then that means that the performance in that Ranji Trophy, someone X may have performed considerably better than somebody who may have done phenomenally well at the under-19 World Cup level. But you see, again, if you take the under-19 World Cup situation, the under-19 Cricket World Cup of the ICC happens every second year. Yeah. So every alternate batch misses the under-19 Cricket World Cup. So somebody who's not part of that batch, then is it his fault that he was, conceived on a particular year, which was to miss the under-19 World Cup, and therefore should he then miss out because somebody has done so well in the under-19 World Cup? And and because of his performance, others are looking at it. But him having not played the under-19 World Cup has done really well at the in Vijay Hazare or Ranji Trophy. Then he needs he needs a look in. He needs to be seen. He needs to have the opportunity or a platform to express his talent. Right. So therefore, I feel firstly that the zonal selection committee is something which is not valued enough.
and some of the selections that take place at the zonal selection committee level prove to be the difference between being seen at that level or not seen at that level. Firstly, secondly, you see the new Luda constitution that has come into place. It does not say that there should be a selector from each zone in the national senior selection committee, Yeah. right? It's just a number of selectors. So maybe 10 years from now, you find a situation that out of the five selectors, three belong to a particular zone. So if two zones there's no representation, then does that mean that how can they keep a good watch on that particular zone? How can a good performance of a particular zone influence the national selectors? And I think somewhere it is also necessary to have a rethink on the not only the quality of selection committees across every place, and I'm not talking about purely from the point of view of the number of games played, but also from the point of view of the ability to actually identify good talent to bloom. So, like earlier on, you had the TRDOs, right? Yeah. And everybody knows Dilip Venksagar did an amazing job as a TRDO, and so I think that's something else which has to be looked at. And I'm only saying this to stress on the fact that zonal selection committees or a zonal tournament and state, it is very important if we are to fairly find talent across the country. You have to think from the point of view of the country, from the point of view of different associations across the country, and therefore it is extremely important to ensure that a talent finds voice or this and that voice is heard at not only the zonal level but also at the national level. So therefore, it I get where Srini is coming from, that you find that there is not much excitement or buzz around the Dilip Trophy, but that has to be created. That needs to be created because it's a very vital tournament as far my understanding of the administration of the game goes. Yeah. So I think it's very important and it needs to be in the zonal thing. And I'm not in favor of the central selection committee, the senior selection committee, deciding all the 4 or 5 teams that would participate in that. That has to remain decentralized. That has to remain democratized. Yeah. No, fair points, Mr. Chaudhary. No, Gushpa, I just want to take your thoughts in on this. How do we keep both the trains heading in the same direction when it comes to picking Dilip Trophy teams and serving the larger goal then? Agreed, you can have zonal committees in place then, but then how do you continue to be in alignment with what's happening with the senior cricket team? वो gap कैसे फिर आप address करेंगे अगर आप same उस पे चलते रहे? Like for example, इस बार North Zone was blessed. I would say we were lucky enough कि Chetan Baji came on board and he was the chairman of the North Zone selection committee, and Chetan Baji knew a fair bit about कि Indian team में क्या चल रहा है, क्या requirement हो सकता है. तभी maybe we saw someone like Harshit Rana, Nishant Sindhu, जो young all rounders थे, जिनका हमें लग रहा था ऊपर अपॉर्चुनिटी बन सकता है. बट इस बार तो चलो चेतन बाजी थे. नेक्स्ट टाइम मे बी I'll come in here before Gushpa answers. Just another point which Srini had said and which you've also now made is see, the way we are looking at right now is top down. Okay. And I'm an advocate of bottom up. So from the grassroots or from the lower level, the strength of the performance has to reach the top. Okay. Otherwise, again, you will find a situation that they are deciding at a central level, and that will demotivate a player. How do you make incentivizing performance is not only money. Incentivizing performance is also recognition, and that recognition is and comes from the point of view of coming in contention. So if the five wise men sitting at the top are the ones who are going to decide
that what how who will do what and what, then the person at the at the lowest rung, the player playing Ranji Trophy will lose interest, and we want to motivate them more. We want them to know that their performance means something, and that will only happen if this whole aspect is democratized. And it should not matter if somebody who's part of the senior national committee is there or not. Ideally, the earlier system was the national, whoever is the national selector from that particular zone, Yeah, you correct, know. correct. So the zone would choose who would be the selector who would represent the zone in the senior national committee. Now that has changed, right? Then it was चलो जो भी होगा उसको आने देंगे बुला लेंगे यहाँ पे. But Yeah. again, somewhere I feel the democratic decision making of selection committee is integral to adding value to the domestic cricket, and adding I think some network issue. Yeah, he's back. Yeah, sorry, I had interrupted. Please, Gushpa. Yeah. Hello. Yes, sir, you're audible. Please go ahead. So should I say? Yeah, sir, please बोलिए. हाँ जी. अनुर सर, ओके, आई थिंक दिलीप ट्रॉफी जैसे भी मतलब इट्स अ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. बीसीसीआई ने पहले आई थिंक 2 साल ट्राई किया था, इंडिया ब्लू ऐसे करके टीमें बनी थी. बट जो जोनल का जो कंपटीशन रहता है, प्लस जोनल जैसे नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, जो फीलिंग है प्लेयर्स में अपने जोन के लिए खेलने की वो अलग ही फीलिंग होती है. प्लस जैसे अनुज सर ने कहा है कि जो जैसे लोकल प्लेयर्स हैं कि कई किसी ने 800 रन बनाए और किसी का बहुत नाम है, उसने बड़ा पहले अच्छा किया हुआ है, बट उस साल रन नहीं बनाए या उस साल विकेट नहीं ली है. तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज द प्रेजेंट फॉर्म. उस फॉर्म में कोई कुड भी कोई बड़ी टीम का प्लेयर भी हो सकता है, कोई जो अभी टीमें बन रही हैं उनका भी हो सकता है. लेकिन आई थिंक दिलीप ट्रॉफी इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और जो जिन प्लेयरों ने भी दिलीप ट्रॉफी में अच्छा किया है वो आगे जाके इंडिया की टीम में आते हैं, जरूर आते हैं. और यही मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और इससे काफी बेटर हो जाएगा. Yeah, before we go ahead to Chetan, thank you, Mr. Chaudhary, for joining in and taking time out. It is always My lovely to pleasure. hear your thoughts, and we'll keep talking, and we'll hopefully meet at Lali pretty soon. Thank you for Yeah, joining in. anytime, you guys are all welcome. Yeah, thank you. Thank you for joining in. Thank you. Thank you. Bye. See you, bye, sir. Yeah, Chaitanya, please. Yeah. Go ahead. See, first, Shreni made few good points. First of all, that the salary cap of the domestic players have to increase. It is very true because we put our prime years of our life when we have to study or we have to, do work or we have to settle our life. We have to get married. There are so many things happening in these years of our life when we are playing cricket. And it's not starts from 18. It starts from 13, 14. If you see, a lot of players don't go even to school. They stop going to school. They only play cricket. And if you see when I was playing, I at that point of time that salary cap was okay because other field people are earning that much of money. It has not increased. If you see, the startups has also come in. Don't think about IPL. Now the youngsters are doing the startups. They are making billions out of it in their prime years, in young age. And the cricketers, those who are putting so much of hard work in the life, they are not earning that much. 12 lakh rupees, 15 lakh rupees doesn't give you a livelihood to live at this point of a time. And after 5 years, it won't happen. And when BCCI is giving so much money, I'm saying, okay, let's not put BCCI to give all that money. BCCI paying, he can increase another 50%, but they are paying 40 crore rupees to every state association. Why not state associations give salaries to the cricketers? Why don't they set a salary? And this is the point. I think Mr. Jodhi would have given the better answer, but for me, yes, salary has to go up. Second point, what Cheney said for the youngsters and the people those are above 30, 32. It's true, but as a selector, I'm telling you, when you have a young kid coming up who is very good, he will make his own way because we need seniors also. Depends, it depends when you are a selector. उस टीम का सिचुएशन क्या है, उस टीम में कितने सीनियर हैं, कैसे सीनियर्स हैं, can we take out 1 or 2 seniors which are above the age
and we can put them aside because they are not the one who can take the team with them, but we need some seniors who can take the team with them. Think, अगर आज हम विराट, रोहित को बाहर निकाल देते हैं, जडेजा, अश्विन, आपके फास्ट बॉलिंग में बुमराह को हम बाहर कर देते हैं एकदम से, suddenly you will see this side will look very different and they will won't have any people, you know, seniors to take them when they have a difficult situation. So same for the state associations. और जो youngsters होते हैं, जो promising youngsters होते हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता है. They make their own way. हाँ, ये जरूर होता है कि डिले हो जाता है. देखिए, और थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं अंडर 19 की. अंडर 19 अगर आप देखें तो एक क्राइटेरिया अंडर 19 का, अंडर 19 में जो खेलता है अच्छा करता है, जो इंडिया अंडर 19 खेलता है, वो बच्चा अगले 2 से 3 साल तक लाइमलाइट में रहता है और रेडार में रहता है सिलेक्टर्स के. बट with the time, if it doesn't grow, the new lot of under 19 India comes up. So जब आप इंडिया अंडर 19 खेलते हो और आप अच्छा करते हैं, तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है. So आपके पास पूरा टाइम होता है, आप जा सकते हैं. Yes, अंडर 16 को आप अंडर 17 करना चाहते हैं, that could be a good call, क्योंकि अंडर 16 में बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है, अंडर 17 में थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाता है. तो yes, he can jump to 19 very quickly and you have less number of boys coming on under 19 pressure, because क्या होता है, अंडर 16 खेलते ही अगले साल में कोई इसको खिलाता नहीं है unless until he has scored lot of runs or taken a lot of wickets or a good all rounder, तो उसको रेस्ट में डाल देते हैं. तो rather putting a player on the rest, it's better he should play under 17 and then if he is performed then he should come to under 19. So under 19 के लॉट के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर, सिलेक्टर्स पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा. अब चौथी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिलीप ट्रॉफी. अब दिलीप ट्रॉफी की मैं बात करता हूँ. देखिए, you cannot give the power to only 5 men in the country. If you remove Dilip Trophy from zonal view, then only 5 people have the whole control of this country, and you know it will be difficult because as a human I have likings and dislikings for sure. Might have some bad experiences, I don't want to pick somebody or I want to pick somebody, so it depends completely on me. So you cannot give that complete power. And as a selector, if I am good, if I am doing job sincerely, I will go to the grounds when the Ranji Trophy is happening, when the Dilip Trophy is happening. I will choose my players and then I will push them. Yes, what we can do, the winners, like you do the rest of India, you can do the rest of Dilip Trophy also, one match where you can pick the best players of the Dilip Trophy and then you can put them there. वैसे तो वैसे ही होता है rest of India और Dilip Trophy और यहीं से आते हैं. But I feel when I played rest of India, it was good that we played against Indian side, because Australia was supposed to come in India and whole Indian side was playing that match. For us, Veeru Bhai was doing the captaincy, for them MSD was doing the captaincy. So that was a different flavor to play that match. So अगर हम ऐसा करें कि रेस्ट ऑफ इंडिया खेले इंडियन टीम के साथ एक मैच और रेस्ट ऑफ दिलीप ट्रॉफी प्लेज विनर, वो जीतेगा उसके विनर के साथ खेले, तो इट विल बी अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट. व्हाट शेनी सेड, दैट कैन बी डन. बट आप देखें जब जोनल में क्या होता है, इतने सारे, देखिए जब आप लिमिट कर देंगे ना इसको, चैलेंजर में ले आएंगे, तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं जोनल के अंदर अपनी टीम्स के साथ. तो अब जब चैलेंजर करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाएंगे. तो पहले इंसेंटिव नहीं है बच्चों के पास कि वो रांची ट्रॉफी परफॉर्म करके कहाँ जाएं, क्योंकि उनको आईपीएल तो मिल ही नहीं रहा, पैसे भी ज्यादा नहीं मिल रहे. तो कम से कम यहाँ पे 2 मैच फालतू मिलेंगे, तो कम से कम मैच फीस बढ़ती है उनकी, और वो थोड़ा कोशिश करते हैं, यार नहीं मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी तरीके से दिलीप को खेलूं. तो दिलीप खेलने आते हैं, दिलीप में फिर वो उनको एक मौका मिलता है एफर्ट मारने का. तो सपोज ऐसे 5 बॉलर हैं जोन के अंदर जो बहुत अच्छे हैं, बट अगर चैलेंजर हो जाएगा तो सिर्फ 2 या 3 ही बॉलर ऊपर आ पाएंगे, बाकी 2 नीचे रह जाएंगे. समटाइम्स यू हैव अ बैड सीजन गोइंग ऑन, यू नीड अ टाइम लिटिल बिट मोर टू परफॉर्म मोर. और वही वो होता है, कई बार आप पहुंचे, आप दिलीप ट्रॉफी और आप जब पीछे थे, आप एकदम सडनली 2-5 विकेट ली और आप ऊपर आ गए. तो यू नो इट विल गेट मोर डेज, मोर अर्निंग, मोर अपॉर्चुनिटी, तो वो हेल्प करेगा. और जब जोनल में आप पिक करते हो ना, तो इट्स लाइक जैसे उन्होंने बोला टीआरडीओ, मतलब आप समझिए 5 आदमी ऊपर काम कर रहे हैं अम्ब्रेला. मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने जो पहले का सिस्टम बनाया था, जिन लोगों ने भी बनाया था, बड़ा अच्छा सोच समझ के बनाया था कि यार जोन से सिलेक्टर्स होंगे तो जोन वाला सिलेक्टर अपने बच्चों के लिए लड़ाई करेगा, और जोन के नीचे वाले सिलेक्टर्स जो होंगे वो अच्छे बच्चों को ऊपर भेजेंगे. तो वो एक अच्छा अम्ब्रेला बना हुआ था. बेसिकली अभी थोड़ा सा अम्ब्रेला टूट गया. आप देखो तो थोड़ा महाराष्ट्र वाली लॉबी स्ट्रांग है, कभी फिर नॉर्थ की लॉबी स्ट्रांग होगी, कभी किसी की लॉबी स्ट्रांग होगी, तो वो बच्चे उधर से ज्यादा पुश होने लगेंगे. रादर गेटिंग अ राइट कॉम्बिनेशन, राइट फ्लेवर, यू वोंट गेट दैट इफ यू रिमूव इट. सो मेरे को लगता है कि नीचे वाले लोग काम कर रहे हैं, आपको कुछ
फीडर्स दे रहे हैं अच्छे प्लेयर्स के, बट एज ए सिलेक्टर व्हेन यू आर सीनियर सिलेक्टर फॉर इंडिया यू कैन गो अराउंड, यू कैन रीड, बिकॉज देखिए सब कुछ ऑनलाइन है आजकल, तो बहुत ईजी है, मैचेस लाइव भी आ रहे हैं, तो आप देख के आपको लगता है यार ये बच्चा प्रॉमिसिंग है, आप बात करते हो, जैसे श्रीवी जैसे सर हैं, ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सीनियर अपने रिपोर्टर्स हैं जिनसे ये लोग बात करते हैं, सिलेक्टर्स बात करके समझते हैं ये प्लेयर कैसा खेल रहा है कैसा नहीं खेल रहा, बिकॉज हम जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, श्रीनी सर वगैरह जैसे जितने बड़े रिपोर्टर्स हैं, ये भी अच्छे क्रिकेटर्स बन चुके हैं, कैसे खेलना है, तो शायद दिल्ली में ऐसे कोच होंगे जो नाम बता पाए, श्रीनी सर बता दें कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्या होता है, क्योंकि इन्होंने जितनी क्रिकेट कवर करी है शायद उतनी बॉलें उन्होंने खेली भी नहीं होंगी, तो यू नो, so as a selector you can talk around, you can take a feel, you can make a thing, or but as a selector sometimes it becomes very difficult for to choose between players. कई बार आप गलती करते हैं, कई बार आप ठीक करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक्स होती है, बट एट द लास्ट व्हेन यू डू समथिंग विद द राइट थॉट, विद द राइट कॉन्सेप्ट, और आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है यू हैव टू गो विद योर thoughts, you have to go with your decisions, and it works for you, it's great. So I think the concept, the way the things are happening, it's good. I think, but yes, the salary has to go up massively it has to go up, because मेरे को नहीं लगता कि 15 लाख रुपए साल में कमा के उसको आईपीएल नहीं मिल रहा, फिर वो इंग्लैंड धक्के खाने जाए, फिर वो या तो कोई और किसी और जगह पे देखे, फिर सडनली उसको टीम से बाहर कर दिया जाए, यू नो, और अभी तो 9 टीमें और भी आ गई, तो आपको दिलीप ट्रॉफी जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मेरे को लगता है सैलरी हैज टू इंक्रीज। Yeah, Srini, you were saying something. I'll just unmute. 1 second, unmute. So Yeah. I'll just go back to the Dilip discussion which I was having. So I didn't mean it in the sense ki zonal whatever. So okay, let me start with this. A domestic circuit now provides 3 big pictures. One, it allows the game of cricket to be played healthily across the length of the country. ठीक है, एक बीसीसीआई जैसे एक बॉडी है तो 2000 प्लस डोमेस्टिक मैचेस एवरी सीजन होस्ट करता है, तो हर उम्र के एक बच्चे को खेलने का मौका मिल रहा है विदाउट द फियर और इनसिक्योरिटी कि मैं बिलोंग करता हूं इस लेवल पे या उस लेवल पे। आप अगर आप खेल रहे हो क्रिकेट, आपको हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपको गेम खेलने को मिल रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक क्रिकेट एक फीडर लाइन बनता है बड़े लेवल के क्रिकेट के लिए। आप अंडर 19 खेलते हो तो रणजी ट्रॉफी के लिए फीडर लाइन बनता है, रणजी खेलते हो दिलीप के लिए फीडर लाइन बनता है, दिलीप खेलते हो इंडिया के लिए फीडर लाइन बनता है। वैसे ही मुश्ताक अली आईपीएल T20 वर्ल्ड कप, आप जिस तरीके से भी उसे देखें, तो दूसरा एक पर्पस जो होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का वो है फीडर लाइन। और नंबर 3 होता है कि आप अपना जैसे चैतन्य ने भी रिपीट किया जो मैं कह रहा था पहले, कि वो आप अपना प्राइम पार्ट ऑफ योर करियर आप इन्वेस्ट कर रहे हो गेम में, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल रिवॉर्ड, एक सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट या मॉनेटरी कंपनसेशन, हर किस्म की जो एक ये है रिवॉर्ड है वो जरूरी है उसमें से रिसीव करना। तो क्या ये तीनों पर्पस जो आज की तारीख में जो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट है, क्या ये इन अ मेजर वे ये तीनों पर्पस को एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है? वहां पे मेरा मानना है सिंसियरली कि वो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि मैं उसको मैं दिलीप में जोनल के बारे में बात किया, मैं उसको चेंज करता हूँ। मैं वैसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि आप एग्जिस्टिंग दिलीप को जोनल में से हटा दो और आप उसको रणजी ट्रॉफी आप चैलेंजर की लाइन पे कर लो, नहीं। मैंने उसमें एक और लाइन डाला था कि अगर रणजी ट्रॉफी जो आपका चल रहा है वो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से बरसों से चला आ रहा है, तो फिर आपको दिलीप पे ध्यान देना है। ओके, क्योंकि दिलीप जो है, टू यूज अ फ्रेज, इट्स वो इंडिया का क्रेम डे ला क्रेम है। वो एक इंडिया का, अगर 5 टीम दिलीप में खेल रही है, मेरे लिए वो 5 में से 15 बच्चे जो खेल रहे हैं 15x5 इज द क्रीम ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टैलेंट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि साउथ अफ्रीका में, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब रोहित खेल रहा है, ओपन कर रहा है यशस्वी के साथ, नंबर 3 पे शुभमन है। मेरे को नहीं पता कि शुभमन को लेके सिलेक्टर्स के दिमाग में क्या है। वो शुरुआत किया उसने अंडर मिडिल ऑर्डर में,
फिर वो ऑस्ट्रेलिया टूर में तुमने उसको भेज दिया ओपनर बना के, अब तुमको ओपनर नया मिल गया, तुम उसको नंबर 3 खिला रहे हो, कल तुम 6 महीने बाद बोलेगे नहीं नहीं ये तो मिडिल ऑर्डर ही था, ये कहां से ऊपर चला गया। भाई तुम कर क्या रहे हो, बच्चा 23-24 साल का बच्चा है, तो तुम कर क्या रहे हो उसके साथ, ठीक है। और ऐसा शुभमन तो एक पॉपुलर एग्जाम्पल हुआ, मैं अगर लेस पॉपुलर एग्जाम्पल्स बताने जाऊं तो फिर तो ये अनएंडिंग है लिस्ट। अब आप देखो कि अगर रोहित यहाँ पे इंजर हो जाता है और मैं शुभमन को हटा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा मिडिल ऑर्डर में गैप पड़ जाएगा, मेरे पास ओपनिंग ये क्या ऑप्शन, क्या अभिमन्यु ईश्वरन। अब आपकी कंट्री में अगर आपका डोमेस्टिक सर्किट इतना स्ट्रांग है और इतना फल फूल रहा है, तो मेरे पास 3 से 4 एग्जाम्पल्स क्यों नहीं है, 3 से 4 ऑप्शन क्यों नहीं है, यू नो। मैं एक बात बताता हूं, जब श्रीलंका का जो डोमेस्टिक सर्किट होता था, फर्स्ट क्लास सर्किट होता था इन द 90s, व्हेन श्रीलंका वाज एट द पीक ऑफ इट्स पावर, वो प्रोविंशियल टूर्नामेंट करते थे, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता था। और तभी मेरा गुड लक था कि वो मैं अर्ली 2005 में मैंने टूर किया था, तो मुझे वो करीब से देखने को मिला। 70 से 75 का एक टाइट निट यूनिट होता था जो उनका फर्स्ट क्लास सर्किट में खेलते थे, प्रोविंशियल सर्किट में जो खेलते थे, और उन्हीं में से निकल के आते थे ये धर्म सेना वगैरह वगैरह, आप नाम ले लो, सब उसी में से निकल, वो इसीलिए इजी होता था। खैर वो तो एक छोटा सर्किट था। मेरा ये कहने का मतलब है कि यू नीड टू फिगर अ वे आउट टू कंडेंस योर टैलेंट। आपको अपने टैलेंट को कंडेंस करना है। एक फ्रिज में आप सारी सब्जियां रखोगे ना, तब आप फ्रिज खोलोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी सब्जी फ्रेश है कौन सी नहीं है, क्या यूज करो। अभी आप मार्केट में चले जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा उसमें, लेकिन एक फिल्टरिंग होती है, राइट। वो फिल्टरिंग, हाँ चेतन वो फिल्टरिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो या तो आप अगर दिलीप को रणजी में करना चाहते हो, मेरे साथ काफी मेरे पास प्रॉब्लम्स है, बिकॉज फॉर एग्जांपल लोधा कमिटी आई, लोधा कमेटी ने कहा इंडिया में 3 सेलेक्टर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन महान भावों ने जाके इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया, उनको लगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में 3 ही सेलेक्टर होते हैं, हमारे पास भी 3 होने चाहिए। अरे भाई साहब, यहाँ 3 नहीं, आप 30 रखोगे तो कम है, 30 रखो आप। इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री, तो आपको यहां से फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव आपको देखना है। तो अब रणजी में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इट इज बिकम, रणजी ट्रॉफी हैज बिकम अ ग्रेट प्लेस टू हाइड। अगर आप मीडियोकर हो, अगर आप जैसे तैसे हो ना, आप ठीक ठाक है ना, आपके 2-4 लोगों के साथ आप रणजी खेल जाओगे 10 साल आराम से, खाते पीते खेल जाओगे, और उसमें रेपरकशन नहीं है फॉर अ पुअर परफॉर्मेंस। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पैथेटिक फॉर अ न्यू कमर टू स्टेप इन, जो मैं देख रहा हूं। और मेरे ख्याल से वो जो है बदलना चाहिए। तो हो सकता है उसमें आप एज कैटेगरी ले आओ, उसमें आप कंपल्शन रख दो कि 2 अंडर 19 के बच्चे रहने ही चाहिए कंपल्सरली रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में। 30 साल के ऊपर का 2 ही बंदे रह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एक फिल्टर लाना चाहिए क्या? और अगर ये नहीं लाना चाहिए, अगर रणजी ट्रॉफी प्रोफेशनल्स के लिए ही रहना चाहिए, जो उसमें भी एक अच्छी रीजनिंग है, हर बच्चा एक अपना करियर बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे भी बना रहा है, तो अगर वैसे ही रखना है तो फिर दिलीप को चेंज करो। दोनों इन द करंट फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं हो सकते। दिस वाज माय सॉरी। Yeah, very very valid points made there, but I think the bigger thing which we have been discussing since quite some time now, जो इंडिया डिस्कार्ड्स होते हैं, मैं इंडिया डिस्कार्ड्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी वो रिटायर्ड नहीं है। एक ग्लिमर ऑफ होप हर क्रिकेटर कैरी करता है, ऑल क्रिकेटर्स कैरी कि यार कमबैक कभी हो सकता है। इस साल का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जो इंडिया डिस्कार्ड्स है वो आर नो लॉन्गर इन द टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, पृथ्वी शॉ is injured for the first 2 games. Maybe he'll come back for the 3rd game. He's still nursing an injury. He's at the NCA. भुवनेश्वर कुमार for उत्तर प्रदेश। अब ये लड़के गुष्पा, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं बड़े नाम है। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और आपने तो दिल्ली का देखा है, आप दिल्ली के इस टाइम हाई परफॉर्मेंस कोच भी हैं बैटिंग ग्रुप के, तो आप देख रहे हैं कि हाँ, इस टीम के अंदर ईशांत शर्मा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत एक, जैसे चेतन ने कहा कि आपको रिक्वायरमेंट टीम का देखना है, तो दिल्ली अभी बहुत एक यंग फास्ट बॉलिंग साइड बन रही है, सो यू नीड समवन लाइक ईशांत शर्मा। मैं मुंबई का एग्जांपल लेता हूं, सौराष्ट्र का लेता हूं। क्या आपको अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की वहां पर जरूरत है? आर्ट दे बेटर ऑफ डूइंग समथिंग व्हिच former greats have done in the past? Go to a smaller team. Someone like Akash Chopra winning the Ranji Trophy with Rajasthan, Wasim Jaffer doing wonders for Vidarbha. Yeah, Gushpa. Yeah, I think जैसे जो बड़ी टीम्स होती हैं, जो बड़ी टीम है, तो उधर के जो प्लेयर जो ऑलरेडी इंडिया खेल
के हैं, प्लस उसके बाद लग रहा है कि हमारा यहाँ पे इंडिया खेलने का चांस नहीं है। तो आई थिंक दे शुड बेटर टेक अदर वीकर टीम्स लाइक वसीम जाफर। विदर्भा 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती है, वसीम जाफर का बहुत बड़ा रोल है, प्लस चंद्रकांत पंडित कोच थे, नो डाउट। देन राजस्थान 2 साल लगातार जीती, उसमें आकाश चोपड़ा, ऋषिकेश कानितकर, परीदा, ये सब भी खेले। और उससे पहले भी बंगाल भी जीती, तो अरुण लाल, अपना शोकी पाजी, तो ये सारे जने खेलते रहे। तो मुझे यही लगता है कि जो बड़ी टीम है, क्योंकि ऑलरेडी उन टीमों में ऐसे यंगस्टर्स हैं, जैसे श्रीनिवास सर ने बोला कि यंगस्टर्स, टू प्रमोट यंगस्टर्स, यंगस्टर्स को जरूर खेलना चाहिए उन स्टेट्स के बड़ी टीम जैसे बॉम्बे, कर्नाटका, बंगाल, दिल्ली, कि उनको मौका जरूर मिले। प्लस मेरे हिसाब से एक एज का जो बात हो रही है, एज का आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज फिट लाइक सूर्य कुमार यादव, उसका डेब्यू आई थिंक 31 साल में हुआ था, 30 या 31 में प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो और भी कई हैं, बट ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, तो उनको अगर छोटे स्टेट को वहाँ पे क्रिकेट डेवलप होगी, वहाँ इतना बड़ा प्लेयर वहाँ पे खेलेगा, तो वो दे विल गेट मोटिवेटेड, बड़े इंस्पायर होंगे उससे। तो उससे मुझे लगता है काफी फर्क पड़ेगा अगर वो थोड़ा दूसरी टीम में खेलते हैं तो। Chetan, your thoughts on this, because we have seen this trend now becoming very popular. अभी लास्ट मतलब 2-3 साल से अगर मैं देखूंगा, नॉर्थ के बहुत क्रिकेटर गए हैं स्टैट पैडिंग करने नॉर्थ ईस्ट टीम्स के साथ। हमने बहुत दिल्ली के क्रिकेटर्स देखा, कोई 1100 का सीजन मार रहा है, राहुल दलाल ने 1300 रन का सीजन मारा प्लेइंग फॉर अरुणाचल प्रदेश। गुशपा वाज देयर, ही वाज द कोच ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई थिंक। वो नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा कि नो मैंने आपका पॉइंट समझा, मैं वही आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब सर कह रहे थे कि मतलब छोटा टीम, मतलब आप बेसिकली गोवा पकड़ लो जो अभी भी प्लेट है इलीट ग्रुप के अंदर, त्रिपुरा ले लो, जैसे अभी रिद्धिमान साहा इज प्लेइंग फॉर त्रिपुरा, राहुल त्रिपाठी हैज मूव्ड शिफ्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा, केवी सिद्धार्थ हैज मूव्ड शिफ्ट फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा। सो ऐसे चेंजेस होते हैं। जलज सक्सेना हैज बीन द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, वो केरला के लिए खेले। अभी पीयूष चावला हम देखते हैं गुजरात के लिए खेल रहे हैं, यूपी के लिए नहीं खेल रहे। तो ये ट्रेंड आपको लगता है हेल्दी है? क्योंकि आरपी सिंह ऑल्सो मूव फ्रॉम यूपी टू गुजरात अपने मतलब फैग एंड ऑफ द करियर में, और यूपी के नए लड़के तभी आई थिंक शायद आप है, वरना आरपी सिंह तो यार खेल रहे थे 34 साल तक रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, बट वो गुजरात चले गए जहां पर उन्होंने रुश कलारिया जैसे बॉलर को ग्रूम करा। मैं जस्ट टू ऐड टू दैट पॉइंट ना, मैं कुछ 1.5 साल पहले तक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता था। तो मैंने एक पीस लिख दिया था 2021 का जो टूर था इंग्लैंड का पैंडेमिक के बीच में, तो उसके पहले मैंने एक पीस लिख दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैंने जेन्युइनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, दैट व्हाट इज भुवनेश्वर कुमार का प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, क्योंकि ऑन अ टूर ऑफ इंग्लैंड he should be among the top bowlers that I should be ideally considering, right? Yeah. For the qualities जो he brings to the table, he should be among my top priorities. But उसका रेड बॉल प्रायोरिटीज लाइफ में कहाँ है? वो बड़ा नाराज हो गया था मेरे से ट्विटर पे, लाइक नहीं मेरा रेड बॉल में अभी भी मन है। मैंने कहा भाई अगर मन है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ऑन द फील्ड, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने वो एक मुद्दा उठाया था, मैं वो इसलिए यहाँ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद में तो आज क्रिकेटर को देख के समझ में भी आ रहा है कि उसका रेड बॉल में कितना दूर तक इंटरेस्ट है। कई बार ऐसे हो रहा है कि प्लेयर को देख के लगता है कि मैं 4 ओवर डाल के मैं खुश हूँ लाइफ में, मेरे को टेंशन मत दो और आप टेंशन लो भी मत, आप अपना देखते रहो। टू बी मतलब अगर आप सच्ची बात पूछना चाहोगे ना, सच्ची बात ये है, देखो अगर मुझे 4 ओवर डाल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो मैं क्यों 25 ओवर डालूंगा? Why I want to do that? As a human, हम झूठ बोलेंगे कि नहीं मैं तो करूंगा, मैं ये करूंगा। आप रशीद को देखिए ना, राशिद को आप टेस्ट मैच खिलाइए, क्या हालत है उसकी, बट वो इस वक्त वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर माना जाता है। तो मेरे लिए बेस्ट बॉलर वो नहीं है, बट हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, एवोल्यूशन इवॉल्व हो गया, क्रिकेट सब कुछ इवॉल्व हो गया है। अगर इसको ठीक करना है इंडिया में, तो आप एक रूल निकालिए। एक तो वो जो मैंने आपको बोला कि इन सबको इंसेंटिव मिलना चाहिए जो बेटर परफॉर्म करते हैं। सेकंड, ये रूल होना चाहिए कि T20 आईपीएल से सिर्फ T20 की ही सिलेक्शन होगी। ये एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। वहां की परफॉर्मेंस कभी भी टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में काउंट नहीं होगी। अगर आप ये कर देंगे तो सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अदरवाइज ये जैसे चल रहा है, आप कितने भी कॉन्सेप्ट चेंज कर लीजिए, वो हो ही रहेगा। मतलब मैं भी नाम नहीं ले रहा, जब आई वाज प्लेइंग आई गॉट इंजर्ड, व्हेन आई वेंट टू एनसीए, देयर वर पीपल सिटिंग आउट देयर, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे वर सेइंग वी आर सोल्ड फॉर crores, व्हाई वी वांट टू गो बैक एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट।
जब हमें पता है हम करोड़ों में बिक चुके हैं 2-3 साल के लिए। आप सोचिए अगर मेरे को कोई 8 करोड़ में खरीद ले 3 साल के लिए, तो मेरा माइंडसेट क्या होगा कि मैं 8 करोड़ वाले में जाके खेलूं, या मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए के लिए पूरी मेहनत करूं और फिर से इंजर्ड हो जाऊं और 8 करोड़ मिस कर दूं। आई थिंक ये पॉइंट है कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के करिए आईपीएल के, या आप मिड कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए आईपीएल के कि भैया 15 मैचों के बाद, हाफ सीजन के बाद हम फिर से देखेंगे प्लेयर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज वहां पे भी कुछ परफॉर्मेंस करो ना करो, आप 2 मैच में परफॉर्म करो, आपको इंडिया में पिक कर लेते हैं। अगर आप देखो जो हमारी इतनी बड़ी लाइनअप बन गई है इंडिया की, उनकी आप परफॉर्मेंसेस तो देखिए कितनी छोटी है। हम लोग जब खेलते थे 100 विकेट लेने के बाद कंसिडरेशन में आते थे कि ये प्लेयर भी कहीं पर है। बट आज एक बार 4 आउट कर दो, आप 4 बड़े प्लेयर आउट कर दो, कहते हो यार इससे बड़ा कोई बॉलर ही नहीं है, इससे बड़ा कोई बैट्समैन ही नहीं है। आप Recency सोचो bias यश तो दयाल है, 5 correct. छक्के खाता है, 5 छक्के खाता है और वो 5 करोड़ में बिकता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसमें उसकी प्लेयर की कोई गलती नहीं है। मैं भी जा सकता हूँ, छक्के खा सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, बट अगर इफ आई गेट द इंसेंटिव ऑफ 5 करोड़ रुपीज आफ्टर गेटिंग हिट, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई आई वांट टू गो एंड प्ले बैक एंड गो एंड प्ले द डोमेस्टिक? आप सोचिए मेरे को 3 साल के लिए 5 करोड़ रुपए मिले, 15 करोड़ रुपए हो गए। मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा 3 साल, मुझे 45 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप मेजर डिफरेंस देखिए, 45 लाख रुपए और 15 करोड़ रुपए। तो क्या मतलब एज ए प्लेयर, एज ए ह्यूमन, मतलब ये झूठ, ये बोलना झूठ होगा कि नहीं यार मैं तो जी ये भी करूंगा वो भी करूंगा। सच्चाई तो ये है दैट पैसा बोलता है। Thank you, Chetan, for being as forthright as always. It was lovely having you here, and thank you, Pushpa, for being around. It was lovely to take your thoughts and talking to you. Yeah, Srini, please. चेतन जो बोल रहे थे ना, उसमें एक मेरे जहन में एक बात आया कि एक वन ऑफ द थिंग्स वो कह रहे थे ना कि क्या कर सकते हैं, एक मेरे दिमाग में ये आया कि आप जो सैलरी कैप जो है ना रणजी ट्रॉफी की, वो आप हटा दो सैलरी कैप, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि आप उसमें मिनिमम वेज डाल दो, सैलरी अपर लिमिट हटा दो। आप उसमें एक मिनिमम वेज डाल दो कि लड़का 12 लाख मिनिमम कमाएगा ही कमाएगा, अगर वो आपके सेलेक्ट होके आ रहा है बच्चा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए वो। और ट्रांसफर विंडो को एनकरेज करना शुरू कर दो फुल तरीके से। ट्रांसफर विंडो को प्रोफेशनल बना दो ट्रांसफर विंडो को। हर स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़का छीनने की कोशिश करने दो कि भाई तू आ मेरे पास खेल, मैं तेरे को पैसे देता हूं, मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूं, तू मेरे पास खेल, मेरे को ये सीजन जीतना है, किसी भी हालत में जीतनी है। आप Good इसको इकोनॉमिकली आप इंसेंटिवाइज करो। No, Good Srini, thought. just adding before we let go of the two gentlemen. This was a trend. So I'll give you an example which actually happened. Sheldon Jackson was poached from Saurashtra to Pondicherry using the same model. After that, some gentlemen in Saurashtra kind of got angry. They complained to the BCCI. Last AGM, I think जो गोवा के अंदर हुआ है, वहां पर ऊपर के ऑफिशियल्स ने डिसीजन लिया है कि दिस विल नॉट बी एनकरेज्ड और प्रोफेशनल्स विल गेट द सेम मैच फीस एज द लोकल प्लेयर्स। तो वो तो मतलब वो हमारा आइडिया तो इन लोग ने पहले ही शॉर्ट आउट कर दिया है। तो थैंक यू गुष्पा एंड चैतन्या। I'll ask Srini to stay back for a couple of minutes. We'll take some rapid fire questions. So thank you both of you. It was lovely talking to you as always, and we'll Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Srini, we have some questions. We'll quickly take these questions before wrapping up. So I'll request the producer. Yeah. No sporting pitches in domestic cricket. I think, Srini, this is a no-brainer. This has been the case. This has been to each its own, using the home advantage to their liking. देखो यही रविशंकर का जो क्वेश्चन है, नो फ्लैट पिचेस। देखो जो माइंडसेट हम डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके चल रहे हैं, यही माइंडसेट इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, आप स्पोर्टिंग पिचेस तो वहां पे भी, आप घटिया पिचेस तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बना रहे हो, हर लेवल पे आप घटिया पिच ही बना रहे हो। यहाँ पे ठीक है आप फ्लैट बना रहे हो, वहां पे आप टर्निंग्स बना रहे हो, ये सोच के कि ऑपोजिशन को तकलीफ होगी, उल्टा तकलीफ आपको खुद को हो रही है। मेरे ख्याल से दिस इज रूटेड इन द काइंड ऑफ कल्चर दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट इन इंडियन क्रिकेट एट दिस मोमेंट, व्हिच आई थिंक इज अ कंफ्यूजन ड्रिवन कल्चर। आपको खुद को नहीं पता है कि आप कहां से आ रहे हो, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और मेरा ये हमेशा ये मानना रहा है कि इफ यू डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ। अगर आपको ये जानना है कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कहां से आ रहे हो ये जानना जरूरी है, जो कि इंडियन क्रिकेट में आज की तारीख में मिसिंग है। एक समय था 90 तक की दशक में, अगर आप देखते, आपको पता था कि आपका जो ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है वो कहां से आ रहा है, एक स्पिन ड्रिवन एक हिस्ट्री के साथ आ रहा है। तो आपको पता था कि आपका एग्जिस्टिंग टैलेंट क्या है, पूल क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और आपको यहाँ से कहां जाना है। वो मेरे ख्याल से दौर जो है वो मिसिंग हो गया।
it's a very important point, but khair, it's still a secondary point. It's still a secondary point जिसमें बैठ के discussion किया जा सकता है. I think I got a very good comment. I'll just request a producer to flash the comment on the Sena Nation first. I think that is a very interesting comment to take. This Very is something important. out of the box. Like ये कभी दिमाग में नहीं आया. बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा, but this is a very very important point. In fact, we should highlight this point. क्योंकि आप आईपीएल में अगर आप बोल रहे हो कि हमारी टीम जाके कनाडा में खेलनी चाहिए, मुंबई इंडियंस अगर इंग्लैंड भेज रही है अपने लड़कों को प्रैक्टिस करने, तो मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम अपने बच्चों को केप टाउन क्यों नहीं भेजना चाहिए? केप टाउन में करो आप एक वो आपका जो ईरानी कप होता है, ईरानी कप जो मैच होता है आपका, आप ये पॉइंट एटलीस्ट शुरुआत करो. ईरानी कप आप लॉर्ड्स में करवाओ, ईरानी कप आप ओवल में करवाओ, ईरानी कप केप टाउन पर्थ में करवाओ. वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. वैसे ही हम एनकरेज करना चाहिए साउथ अफ्रीकन टीम्स को और ऑस्ट्रेलियन टीम्स को कि आप आके अपनी ईरानी जो है वो आप यहाँ खेल लो. करेक्ट. गुड. Appreciate your feedback, KK. Sell IPL franchises to every state association, go the football way, relegation, promotion, so and so forth. Ayush, sell IPL franchise to every state association, go the football way, relegation. नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मोटा मैं समझ रहा हूँ आयुष क्या कहना चाहते हैं. सॉरी, यहाँ कुछ पटाखे फूट रहे हैं तो डिस्टर्बेंस है. तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर एक्ट ड्रिवन है. उसमें सुप्रीम कोर्ट भी घुस के कुछ नहीं कर पाई. सुप्रीम कोर्ट तक घुस के एक समय के बाद हाथ जोड़ लिया कि माई बाप हमको छोड़ दीजिए, आपको जैसे क्रिकेट चलाना है आप चलाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं. तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो एक मेंटालिटी है वो कहाँ से आ रही है, बट इन द लॉन्गर रन दिस इज नॉट feasible in the current structure. Correct. Just one last question before we let Srini go and wrap up this very interesting discussion which we had. Should BCCI appoint a director of cricket operations to manage senior men's cricket overall operations and report to BCCI officials for improvement? Improvement official. They already have cricket operations के डायरेक्टर. उसके लाइफ की प्रायोरिटीज बहुत अलग हैं जिंदगी में. उसको डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है. ये बहुत ऐसे नहीं कि बीसीसीआई के पास लोग नहीं है, बीसीसीआई के पास लोग हैं, इसलिए ना आपको और मेरे को पता नहीं कि वो करते क्या है, फर्क उतना ही है. तो बीसीसीआई, हाँ, हालांकि शुभ का जो क्वेश्चन है, शुड अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई नीड्स टू इन्वेस्ट इन प्रोफेशनल्स एज मैन पावर इन अ लार्जर कैपेसिटी. एक डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा आपका. एक टीम अपॉइंट करनी है आपको हर लेवल पे, वो भी बीसीसीआई. मेरे को ना आपको शुभ गुप्ता का सवाल है, वो मैं एक लाइन में खत्म करता हूँ. एक बच्चा आया, मेरे कोई पहचान के थे, उनका बच्चा है, वो मेरे पास आया, वो कॉलेज से पढ़ के निकला, बोला सर मुझे आप हेल्प कर सकते हैं क्या, इंटर्नशिप करनी है. मैंने क्या करोगे? बोले मेरे को बीसीसीआई के साथ इंटर्नशिप करनी है. मैंने कहा क्या होती है? तो उसके दिमाग में था, बच्चा था वो, उसके दिमाग में था कि बीसीसीआई मतलब होगा कोई कॉर्पोरेट, मतलब जो साउथ मुंबई या साउथ दिल्ली से ऑपरेट करता होगा, बड़ी ऑफिसेज होगी. मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा तू बीसीसीआई के ऑफिस में आ, वहां पे एसी भी नहीं चलती है, सिक्योरिटी गार्ड आया कि नहीं वो जाके देखना पड़ता है, वहां कोई नहीं आता है. तो बीसीसीआई हैज टू डू थिंग्स प्रोफेशनली एट अ मच लार्जर लेवल एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. उसके लिए अलग शो रखना पड़ेगा. उसके लिए अलग शो रखेंगे. बट ऑन दिस नोट आई थिंक वील एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग domestic cricket discussion. The season gets underway from 5th of January and we as promised will bring you all the stories from ground zero. We'll be on the ground starting from tomorrow. So keep watching Cricket Next and keep reading cricketnext.com. Hit the bell icon, hit the subscribe button, follow us on all our social media handles, because as we have been saying, cricket matlab Cricket Next. Thank you Srini for taking time and talking to us. Thank you guys for watching. Fastest cricket score updates या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.